नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। स्वागत है आप सभी का सुनाओ अपनी कहानी बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में, जहां आप अपने जीवन के अनुभव एवं किस्से साझा कर सभी को एक नई प्रेरणा देते हैं। तो आइए कहानियों की इसी कड़ी में आज हम मुलाकात करते हैं आकाश अरोड़ा से और जानते हैं इनकी इस खूबसूरत जीवन यात्रा के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम आकाश अरोड़ा से मुलाकात करें, आइए इनके इस सफर से जुड़ी कुछ खास बातें कर लें। आपको बता दें, आकाश अरोड़ा एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड सोशल वर्कर है। ये सॉर्टेड स्क्वायर कोवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड और हम फाउंडेशन के फाउंडर हैं। आकाश अरोड़ा का जन्म झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन दोस्तों इनकी परवरिश ग्वालियर शहर में हुई। जी हाँ, इन्होंने अपना बचपन ग्वालियर में ही बिताया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया और एमबीए करने के बाद कुछ समय के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया और फिर ये ग्वालियर आ गए और अपने शहर के लिए कुछ बेहतर करने का फैसला किया। आपको बता दें, इनकी 5 पीढ़ियां सरकारी नौकरी में है। जी हाँ, परिवार में ज्यादातर सदस्य गवर्नमेंट जॉब में ही है। ऐसे में इस चेन को तोड़कर बिजनेस लाइन में एंटर करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में इन्होंने किसी तरह अपने इस सफर की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, आज से 7 साल पहले ग्वालियर में सॉर्टेड स्क्वायर कोवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इसके पीछे इनका उद्देश्य स्टार्टअप को एक रिसोर्सफुल इकोसिस्टम प्रोवाइड करना था। इसके अलावा ये पिछले 10 सालों से हम फाउंडेशन नामक एनजीओ भी चला रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जब इन्होंने इन सब की शुरुआत की तो कुछ चुनौतियां भी इनके सामने आई, लेकिन इन्होंने उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कड़ी मेहनत के बलबूते आज एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड सोशल वर्कर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। दोस्तों, इनकी सफलता की ये कहानी देश के कई युवाओं को अपने करियर में आगे बढ़ने और नई दिशा दिखाने का काम कर रही है। आकाश अरोड़ा की इस अमेजिंग जर्नी से जुड़े ऐसे ही कई और किस्सों एवं अनुभवों के बारे में जानने के लिए आइए अब हम सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। So I'm Akash Arora, मैं ग्वालियर से हूँ एंड यहाँ पर एक कोवर्किंग स्पेस मेंटेन करता हूँ, एक मैनेज कर रहा हूँ। I founded this space 7 years back to like develop a resourceful ecosystem in the city. Apart from this, I'm managing an NGO called Hum Foundation, which is being managed by me from past 10 years, and that is into youth development and film space particularly. And I do have a digital marketing company with me, which is my in-house team. We do digital marketing for big corporates in the healthcare industry. And like for my background, I have completed my MBA from Punjab University. I got into some job with a private MNC. Then I moved back to my city to work for the city to create a resourceful youth ecosystem in the city. And that is why we started this Hum Foundation. Motive was always the same, that let us go together, let us do some knowledge sharing, let's do some interesting and impressive work so that we can grow the city altogether. And that is how this Hum concept came into the picture. So in my first years of my engineering, I initiated a magazine called Alek Life in Pages. It was a city-based youth magazine where we used to it was a lifestyle magazine altogether. We used to motive was to promote leadership among the youth, which was there was a downfall in the leadership like anything. So we started working on this magazine thing. For 2 years, I worked on this magazine, and we used to sell around 7,000 copies every quarter, right? With this particular domain, I started working on multiple NGOs, creating a community of NGOs in the city. Who were creating some ground impact on the society. Once that thing happened, I realized the importance of being together, and that is where Hum Foundation came into the picture. The Hum Foundation का एक बहुत सिंपल सा मोटिव था, to share the knowledge, right? आपके पास एक स्किल है, मेरे पास एक स्किल है. I'll teach you my skills, you teach your skills, we'll grow together. So probably at the end of the day, हम दोनों के पास 2 skills होंगी. And when there's a huge bunch of people together, anyways, you can grow
to like इसका ना कोई upper limit नहीं है, grow anywhere. That is where this Hum Foundation came into the picture. We used to introduce ourselves at that time probably with a very single quotation that हम एक ख्याल हैं, ख्वाबों में मिलेंगे हम, और हम एक सवाल हैं, जवाबों में मिलेंगे हम. Because it was very difficult to make people understand what our NGO was actually doing. So we started this concept. We ran it for like 5 to 6 years. हमने इस पे काम किया, and during that particular time I completed my engineering. I am a mechanical engineer, and on the other side I did several projects like manufacturing a go-kart. I was actually running my magazine itself on some side. I was completing my MBA after that. Probably there were certain projects which I was doing with my MBA degree altogether, and Hum NGO was running back in behind. We expanded our NGO to Chandigarh, to Delhi, to Kerala, and so many cities in the country. Probably with this exponential growth, I realized that I have some entrepreneurial skills in myself. And that is with that now is the time after the MBA degree, I should utilize them to develop a business model where I can bring growth for the city, then for myself, of course, right? And probably that is going to help the NGO working more efficiently, right? So that is why we started up with this co-working space in the city. And of course, that strengthened our NGO part as well, because on one side in the NGO, we were trying to build up a resourceful ecosystem for the youth. And on other side, this co-working space came into the picture where we started building a more value-added community for the startups in the city. And this co-working space was more focused on taking Gwalior to global and global to Gwalior. That was the whole motive. And of course, yes, जैसा कि वो कहते हैं ना कि हमसे मैं में आते ही अभिमान शुरू, और मैं से हम में आते ही प्रगति और परिणाम शुरू. That is what happened when we started celebrating the togetherness. Results were fantastically like great. So that is how the whole picture of like my journey came into this picture. I started all these things one by one. Probably in this particular scenario, when the co-working space started, we faced the pandemic just after 7 months of the starting. Right, 2 years of pandemic taught us how to develop the community digitally as well, and that is how like we shifted our models into more flexible models of business. And probably that is where we started a digital factory also in Gwalior, which is again into digitalization of the local businesses. And slowly things are growing. We have started out with a concept of brand Gwalior. So we are working for the Gwalior brand as a whole in the city, trying to develop a community culture over here. They are trying to suburban areas जो nearby हैं उनको develop करने का काम कर रहे हैं. वहाँ पर हम लोग स्कूल लेवल से startup culture build करने का काम कर रहे हैं अपनी CEO under 18 community के through. So there are n number of things which we are doing to make sure the impact goes very grounded and the growth is there with every startup in the city. So yes, of course, with every business, with every initiative you take, परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, मेरे साथ भी आई. Of course, I had n number of things to discuss. Right, finance was a problem in these starting days, but then probably when you have a community with you, when you have a good network, ये कोई बड़ी problem बचती नहीं है. Right, probably network and community is the solution to 90% of your problems in business and any kind of initiative you're doing. That is what I believe. So Hum being a very good strength for me, I had a very good community connect with this NGO particularly. From the businessmen to the administration, to the politicians, to the youth, to the volunteers, to the team, everything came from this particular concept of Hum Foundation. And you know what, probably that is what I promote with everyone. मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मिलकर काम करो. ग्रोथ तभी होगी जब हम मिलकर करेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे. कोवर्किंग, आप देखिए मेरे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो हम फाउंडेशन हो, चाहे वो आलेख मैगजीन हो, चाहे वो कोवर्किंग स्पेस हो, आई हैव ऑलवेज प्रमोटेड कम्युनिटीज लाइक एनीथिंग. आई लव प्रमोटिंग कम्युनिटीज. राइट नाउ आल्सो आई एम वर्किंग विद अ वेरी गुड कम्युनिटी. मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ सेल्स गाय. आई हैव सीन एन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स जहाँ पर सेल्स टीम के लिए बहुत स्ट्रगल चल रहा है इन दी होल स्टार्टअप इकोसिस्टम. So I started working on this very important thing. I personally belong to a domain called sales. So I started working on this domain as a sales guy. I promote myself as a sales guy, Akash Arora, and I like try my best to train a number of working professionals. I train till now, and I keep on training working professionals each day, so that the company grows at the end of the day. So like this is also a community which I'm trying to build
like apart from regular work which we do have in our businesses daily. तो ये परेशानियाँ थी बहुत सारी, और उनको लाइक फाइनेंस वाज अ प्रॉब्लम। ऐसे लोग क्या कहेंगे, वाज अ बिगर प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, क्योंकि व्हेन यू एंड अप विद अ वेरी गुड डिग्री ऑफ एमबीए and probably you have a very good job in hand that goes to like 10 LPA. So anyways, leaving that job, coming back to starting your own business from like something where there's no base particularly. So maybe that was a concern for everyone at home as well, and for people who were like my, you can say advisors, you can say, right? So nobody wanted me to do that, take that step particularly, but your, you know, entrepreneurial journey शुरू ही वहीं से होती है जहाँ से risk शुरू होता है personally. So I did that step when I was step लिया, and slowly of course pandemic आया उसके बाद, है ना, लोगों को ये समझाना बहुत डिफिकल्ट था. Everybody was running behind this concept of लोग क्या कहेंगे. I always believe in this thing, अगर लोग क्या कहेंगे वाले कंसेप्ट पे काम करना है, उससे अच्छा है कि हम लोगों के साथ मिलकर एक हम फाउंडेशन बनाने, राइट. और शायद वो लोग जब पार्ट होंगे सिस्टम का तो वो समझेंगे कि हम कर क्या रहे हैं. दैट इज वेयर उनको कुछ कहने को नहीं रहेगा. दे आल्सो go believe in the hustle which the startup entrepreneurs have these days. So I have personally felt this thing, and I always suggest people keep patience, keep on doing things. समय के साथ everything happens, but it takes time. So at the right time सब कुछ होगा, आपके साथ भी होगा, और किसी के साथ होता है. You have to keep patient and try working. आप कंसिस्टेंसी बस लगे रहिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन भगवान हमेशा निकालते रहता है. भगवान क्या, वो कहते हैं ना, जब हम कोई चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उस चीज़ में आपकी हेल्प करने लगती है. That happens. So just believe in that and do hard work, do smart work, do whatever you want. आप हर चीज़ में अगर अपने इसमें लगे रहते हैं, इसलिए आप में वो जुनून होता है. Everybody has a role model in his life. I have like, you know, my basic hobby which I always talk about to people is reading people. I love reading people. I used to have good interest in books a time before, but now I love reading people, because every time you meet a person, you read him, you'll have a number of things to learn and to imply in your life. So everybody around me, everybody is a role model these days. But yes, of course, there are some people who values you remember, who values you you know, focus in your life, which helps you understand the real meaning of your journey. That is where I've always believed in Swami Vivekananda. He is a youth inspiration. He's a youth leader altogether for the whole world. And he has very famous quote, anyways, everybody has remembered this, stop, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Right. So that is the real motivation which everyone should have in this when he is at a young age of college years, right? Particularly, विवेकानंद जी कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान ने मेरे लिए भी एक गाड़ी, एक बहुत बड़ा बंगला, एक बहुत सारी सुविधाएं जुटा के छोड़ दी हैं, लेकिन उनको पाने के लिए मुझे अथक प्रयास करना है ताकि मैं उन सुविधाओं को जुटा सकूँ, एक अच्छी लाइफ जी सकूँ. तो दैट इज देयर ऑलरेडी, चीज़ें हैं आपके लिए बनी हैं, बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड परिश्रम से ही वो चीज़ें मिलेंगी. दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड दैट इज व्हाट आई वर्क ऑन टिल. मैं हमेशा सबसे शुरू से कहता हूँ, इवन हम जब शुरू हुआ, आई वॉज ऑलवेज इन दैट फेस. मैंने कॉलेज में देखा था, स्टूडेंट्स टीयर 3 कॉलेजेस में हमेशा टीचर्स को ब्लेम करते हैं, टीचर्स मैनेजमेंट को ब्लेम करते हैं, मैनेजमेंट अगेंस्ट स्टूडेंट्स को ब्लेम करता है. दिस ब्लेम साइकिल कॉन्फ्लिक्ट, हर किसी को ब्लेम करके बस अपना पल्ला झाड़ लेता है. जस्ट हैपेंस एवरीवेयर इन एवरी एजुकेशन वर्ल्ड. बस हो ही रहा है ना कि उस वजह से ऑन वन साइड इंडस्ट्री का पेस बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम का पेस उतना रैपिड नहीं है, और ये जो चेंजेस हो रहे हैं रेगुलरली, इस वजह से गैप बढ़ रहा है. तो उनको ब्रिज करने के लिए देयर शुड बी समवन. इसमें आप देखेंगे n number of edtech startups, n number of people are working on bridging this gap through certain training people with certain skills or domain relevant skills. But ultimately वो बहुत कम है अभी की डेट में. जब हमें यूथ की बात करते हैं ना, तो इनको चैनलाइज करना आज की डेट में is very very crucial, especially when there are millions in number on the earth, right? तो यूथ चैनलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और ये इसको करने की सबसे पहले स्टेप लेंगे, फिर ब्लेम गेम खत्म करना पड़ेगा. हमें कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट? हमें मानना पड़ेगा कि ये जो है ये ऐसे ही है. एजुकेशन सिस्टम अगर खराब होता तो शायद कोलैप्स हो चुका होता सालों पहले, राइट? 100 साल से चली आ रही एक धारणा, एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम अगर वो खराब होता तो शायद वो कोलैप्स हो चुका. दैट इज व्हाट आई बिलीव. उसमें कुछ तो है ऐसा जो वो आज भी रिटेन कर रहा है, और बहुत अच्छा रिटेन कर रहा है. एवरी ईयर thousands millions of youth इंडिया से या अक्रॉस द ग्लोब एजुकेट होके निकलते हैं फॉर द पर्टिकुलर जॉब्स वो ढूंढते हैं,
राइट। स्ट्रगल यहाँ पे है कि ब्लेम गेम जो है ना, ये नेगेटिविटी भरता है, ये हमारी एनर्जी को डिग्रेड करता है। दैट इज व्हाट आई डोंट पर्सनली फील। एंड मैंने हमेशा सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करना के लिए कोशिश करी है। एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कन्वे एज अ मैसेज टू एवरीवन। आप एजुकेट, जो भी आपके जो कंडीशंस हैं, आप उसको एक्सेप्ट करो। करने वाले लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और ना करने वाले लोग हर चीज़ के लिए 100 बहाने ढूंढने में टाइम खराब कर देते हैं। तो वो बहाने वाले पॉइंट से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन से बाहर निकल, जब आगे चीज़ें लेके आते हैं, तभी शायद चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े लोग हैं, लीडर्स हैं अलग अलग डोमेन में, दे हैव लेफ्ट दैट कंफर्ट जोन फार बिहाइंड। उन्होंने हमेशा बहानों को ना ढूंढते हुए करने के सॉल्यूशंस ढूंढे। दैट इज वेयर द रियल पिक्चर कम्स इनटू सीन, राइट। तो ब्लेम गेम खत्म करना पड़ेगा। दैट इज द रियल लर्निंग व्हिच आई हैव gone through in past so many years. So I think success criteria for my company is only two things: network, which we enjoy a lot. हम लोग हमेशा अपने बिजनेसेस में या एनजीओ में ग्राउंडेड वर्क करने में फोकस करते हैं शुरू से। आई ऑलवेज ट्राइड माय टीम की, मेरी टीम कभी एक्सक्यूजेस पे बिलीव करना नहीं शुरू किया। हमने कल्चर बिल्ड किया है यहाँ पे जिसमें हम एक्सक्यूजेस को साइड रख के काम करना पसंद करते हैं। आई ऑलवेज फोकस ऑन एंड रिजल्ट्स, impactful results particularly, I would say, which is the key success of a good network which I have. So whatever you promise, you deliver is the only key mantra of my success, particularly till now. I don't say I'm very highly successful, but yes, till now जो भी success है वो सिर्फ इसी theme पे है कि whatever I promise, I deliver to anyone in the network, to anyone as a client of my company, to any stakeholder of my life. I जो भी मैं प्रॉमिस करता हूँ वो मैं डिलीवर करता हूँ. That is what I believe. Be realistic with your words, and that is where people will start trusting on you. When that trust is there with you, of course, you'll be able to grow easily in the network. In case of achievement, I would say I am really proud of the journey till now which I have been through. Right, I have this company which I have started right now 3 years back. I've it had suffered from a lot of things. Like it had COVID pandemic in between. It had so many ups and downs. But particularly right now, I have a team of 45 people in house, and this company has hit the topmost target in last financial quarter, and probably we are slowly and daily growing. That is what the real grounded impact which I have came through. ये जो कोवर्किंग स्पेस के थ्रू ग्वालियर में हमने 250 स्टार्टअप की कम्युनिटी बनाई है, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड प्रोबब्ली बिगेस्ट कम्युनिटी अगर हम बात करते हैं टीयर 3 एरेना में, राइट। तो एक पर्टिकुलर सिटी में 250-300 स्टार्टअप्स का होना, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी में उनको चलाना, right, is of course a very good achievement which I believe. Of course both of things have equal importance in the life. Education बहुत जरूरी है, बट एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफकोर्स वो एक लाइन है ना कि अगर ना हो अमल, हो इल्म के होने से क्या हासिल। अगर ना हो अमल, हो इल्म के होने से क्या हासिल, किताबें लाद कर भी तो बहुत खच्चर निकलते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑफकोर्स एजुकेशन अकेले कुछ नहीं कर सकते अगर आपने एजुकेशन को अप्लाई करना नहीं सीखा रियल लाइफ। एक्सपीरियंस इज एनीवेज more important, of course, that is needed and much needed. Education अकेले कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमने एक्सपीरियंस नहीं लिया उसके अंदर। अभी पीपल यूजुअली हो ये रहा है कि अभी स्टार्टअप इंडस्ट्री में ना हम कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट करते हैं और वो अच्छा हो जाता है तो हमें लगता है कि हम स्टार्टअप कर सकते हैं। नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। एंड 90% केसेस में इसी वजह से बिना रिसर्च किए हुए कंपनीज ओपन होती हैं एंड क्लोज भी हो जाती हैं, राइट। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर 70% ऑफ दी कंपनीज क्लोज हो जाती हैं, और बाकी बची हुई कंपनीज में से भी 70% कंपनीज नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्लोज हो जाती हैं। तो राइट मेंटर्स राइट टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते, राइट। So for that particular thing, I have a vision. I'm working with Hum Foundation in that domain, trying to get the right mentor available at right time to a startup. That is what I am particularly working on, because कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्ट्रगल्स या सिचुएशंस आते हैं जब हमें लगता है काश कोई होता जो हमें गाइड कर देता इस सिचुएशन पे या हमारी हेल्प कर देता। तो राइट नाउ दैट इज वन पार्ट, बट यस
हम बिना रिसर्च किए हुए चीज़ें शुरू कर देते हैं, या रिसर्च नहीं करके आइडियलिस्टिक अप्रोच को लेकर काम करना शुरू कर देते हैं, या कई बार हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे चली जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। आई ऑलवेज आस्क पीपल टू गो रियलिस्टिक विद एवरीथिंग व्हिच यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाइल स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, like finding a co-founder with you, finding a business partner, creating a business model, creating a product. Everything should be well researched in researched in terms of the customer needs, not in terms of your needs. राइट, हमें कई बार लगता है कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, ये हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट में चल जाएगा, हम ये नहीं सोचते कस्टमर को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। दैट इज द रीजन कि हम स्ट्रगल करते हैं, मार्केटिंग कर नहीं पाते हम, एंड अल्टीमेटली वो चीज़ एक पॉइंट पर आके हमें ना चाहते हुए भी क्लोज करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। राइट, तो एंड दैट इज वेयर डिमोटिवेशन कम्स इन द पिक्चर, डिप्रेशन कम्स इन द पिक्चर। अल्टीमेटली हमें लगता है कि एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे काम की नहीं थी या हमारे बस की नहीं थी, बट नहीं, बस की है अगर वो राइट तरीके से शुरू की जाए, राइट स्टेप्स के थ्रू शुरू की जाए। तो फर्स्ट स्टेप इज रिसर्च। रिसर्च अगर अच्छी होगी ज़रूर बहुत अच्छा कुछ किया जा सकता है। रिसर्च अगर अच्छी नहीं होगी तो आई एम श्योर चीज़ें बहुत जल्दी बैठ जाएंगी। तो आई ऑलवेज एंट्री बैरियर सबसे रिसर्च ही होता है, या रिसर्च करके एंटर करेंगे तो हैव वेरी गुड कंसेप्ट। रिसर्च नॉट समथिंग विच रिक्वायर्स अ डिग्री इन हैंड। रिसर्च की जा सकती है मैन्युअली, रिसर्च की जा सकती है नॉन स्किल्ड पर्सन के थ्रू भी। उसमें कोई डिग्री की नीड नहीं है कि हमने बहुत अच्छा कोई PhD कोर्स करना है फॉर दैट रिसर्च। नो, डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। इट रिक्वायर्स योर open mindedness, your realisticness. That's it. I believe COVID has taught a lot to us. It has taught that there is a life above this materialistic world, of course. That one side, nature is important, being very flexible with your business model is important. COVID has taught us to accept digitalization and get comfortable with it. A number of good things has happened in past 2 years. Like हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है, आगे बढ़ के सोचने का मौका मिला है। अभी तक जो भी बैरियर्स थे डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड को लेके, राइट, वो सारे बैरियर्स रिमूव हो गए, and probably people have accepted digitalization in their life. That's one of the most important thing. A world without boundaries has come into the picture, and of course that's a very very good achievement for the whole globe, right? For the whole earth. In fact, everybody is living on who is on earth these days has experienced a healthy lifestyle, probably a lifestyle where we believe in peace, a peaceful world, a world without boundaries, a world more global, and probably a world which has like power to grow, power to help each other, and that happened a lot. Like in COVID, सबसे चीज़ जो मैंने experience करी वो ये थी, everybody was helping everybody else selflessly, and वो एक बहुत बड़ा plus point था। राइट, अभी तक ये होता था हम लोग जब जाते थे तो NGOs में many people don't want to work, उनको लगता है हमारे बस का नहीं है, क्या करेंगे हम समाज सेवा करके या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज। बट अभी ये हुआ कि everybody helped everyone else back to very selflessly. There was no selfishness inside. Like हम सब ने materialistic world से ऊपर उठ के काम किया कोविड टाइम पे, and probably that was one very good experience which I have seen as a humanity thing which came into the picture. बहुत अच्छा कुछ हुआ है उस टाइम पे, and yes, of course. So I personally feel COVID has taught me as well a lot of things. I went we developed flexible business models. अभी तक हम लोग बहुत adamant या strict रहते थे अपने business SOPs को लेके. Everybody has gone through change in the SOPs, developed the SOPs that are flexible enough to as per the situations, right? So a number of things happened in this last 2 years with everyone in every sector. Probably थोड़े up down थे of course businesses में हर किसी के, but then वो up downs कहीं ना कहीं अच्छी growth और अच्छा successful career लेके आए हैं अपने साथ, ऐसा मुझे लगता है। Born in Jhansi, Uttar Pradesh, and brought up in Gwalior. Right, I've seen my family, everyone in my family, from my grandparents to my parents, my uncles, my aunties, everybody was in a job, right? I'm the first one from past 5 generations who started my business, right? So that was of course a struggle for me as well, but particularly everybody accepted it and gave me a green signal कि नहीं आप शुरू करो, कुछ तो अच्छा होगा, because everybody in my family was into some kind of government job. My grandmother was a teacher, my grandfather was working with railways, my uncles, my aunties, everybody is in job somewhere. Even my mother and my father are in government jobs. So that is where things were a bit struggling for me, because
leaving that phase of behind and starting up from very ground. I am a self-made entrepreneur, so probably that turns out to be a more struggle. We are completely bootstrapped, and probably things are not always in favor, right? But that is why I say network has changed the whole game. It was only network which has like played the whole game. Yes, of course, childhood memories. I was a very keen kid. मेरा interest area say music, and I have went to national level music competitions as well. During my school days, I used to be a very more into like extracurriculars. I have always been into good competitions, painting, dancing, karate, everywhere, judo. Hard चीज I have tried and experienced. That is the reason when I started the Slum Foundation, I always asked people to live the life. वो कहते हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर 100 किरदार छुपे होते हैं, तो वो जीता सिर्फ एक पे जो सोसाइटी को दिखाना है, तो क्यों ना 99 किरदारों को जी लिया जाए जो काश या मगर में छूट गए है। तो वो एक कंसेप्ट था जो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ हर किसी के सामने कि आप जियो, खुद को जियो, क्योंकि चाइल्डहुड में कई चीज़ें छूट जाती जो हम नहीं कर पाते। So try doing it. I write poetries. I love writing poetries. मैं हमेशा लिखता हूँ, and probably that is the reason you give a space to yourself. हमें अपनी hobbies को जीना चाहिए. That I have learned in my childhood and practicing till date back. अगर मुझे टाइम मशीन में डाल दिया जाए, मुझे वहीं भेज दिया जाए जहाँ से करियर शुरू हुआ था, तो ऑफ कोर्स मैं जाना चाहूँगा वहाँ पे, बिकॉज मैगजीन एक ऐसा इनिशिएटिव था हमारा, which was a dream project altogether. I have worked a lot with the magazine. 1 साल लगा था हमें अपनी पहली मैगजीन लॉन्च करने में, एंड वो भी n नंबर ऑफ एफर्ट्स के बाद हम एक फर्स्ट 20 पेज मैगजीन मार्केट में लेके आ पाए थे, कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि इतने फंड्स क्रिएट नहीं हो पाए थे। फर्स्ट कॉपी थी वो, एंड प्रोबेबली उसमें स्पॉन्सर्स को जोड़ना वाज अ स्ट्रगल फॉर मी ऑल टुगेदर। स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, छोटा शहर था, किसने स्पॉन्सर वर्ल्ड का नाम भी नहीं सुना था यहाँ पे आज से 10 साल पहले। हमें नहीं पता था प्रपोजल्स कैसे बनते हैं, चीज़ें होती क्या हैं, एंड उस टाइम पे हमने यहाँ पे जब फ्रेंचाइजीज नहीं थी, बिगर बिजनेसेस नहीं थे, लोग मार्केटिंग को लेके इतने सीरियस नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे वी स्टार्टेड दिस मैगजीन। 1 साल बाद जब वो मैगजीन लॉन्च हुई थी, एंड प्रोबेबली उसके बाद जब वो मैगजीन चली और 2 साल तक हमने उस मैगजीन को रन किया, फेमस राइटर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस दी इंडिया wrote for that magazine, including like my very good inspiration, Mr. N. Raghuram, Mr. Like an international motivational speaker, Nitya Shanti ji, Dr. Kumar Vishwas. Everybody has written for that magazine. Being living that particular phase of editor of that particular magazine, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उसे फिर से कभी लाइफ में वहाँ से शुरू कर पाऊँ, तो अब मैं जो मिस्टेक्स उस समय हुई थी कि वो मैगजीन एक पॉइंट पर कंटिन्यू नहीं हो पाई। वन रीजन वॉज कि लीडरशिप इतनी नहीं थी प्रिंटेड मीडिया की यूथ में, बट यस ऑफ कोर्स आई बिलीव कि हाँ, अगर उस टाइम पे डिजिटलाइजेशन होता तो शायद हम और भी अच्छा ग्रो कर चुके होते। बट देन आई श्योरली, इवन इफ इट नॉट इन अ टाइम मशीन, मैं कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसको डिजिटली स्टार्ट करना जरूर पसंद। माई वर्क, देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आई लाइक द मोस्ट। फर्स्ट इज आई राइट पोएट्रीज। मैं पोएम्स लिखना बहुत पसंद करता हूँ। हिंदी पोएट्री इज समथिंग which is a very deep down part of my life. Daily I write, try to write something, I explore, I write and read poetries as well. We have a very good community of writers and journalists in India, and probably I do manage a page called Katash where we write political sarcasm. Right, हम लोग political satire page है हमारा, एक quotation है, ना तो हम आस्तिक है ना ही हम नास्तिक है, हम तो बस sarcastic है। राइट, सो वो पेज हम लोग मैनेज करते हैं पैन इंडिया लेवल पे। इट इज वन ऑफ दी लाइक इट हैज़ अ गुड फॉलोअर बेस एज वेल। हमारे पास 2 लाख लोगों का ऑर्गेनिक फॉलोअर बेस है उस फेसबुक पेज के ऊपर, एंड ये पेज भी हम लोग करीब 5-6 साल से मैनेज कर रहे हैं रेगुलरली। आई हैव अ बिग टीम विद दैट एसोसिएटेड, सो पीपल हु आर इनटू हिंदी जर्नलिज्म फॉलो दैट पेज अ लॉट। लाइक वहाँ पर मैंने अपनी पोइट्रीज बहुत पब्लिश करी है, कई सारे हिंदी नेशनल न्यूज़पेपर्स में वो पोइट्री पब्लिश हो चुकी है विद गॉड्स ग्रेस। राइट, सो यस ऑफ कोर्स ये मेरा पहला ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड हॉबी है जिसको मैं रेगुलरली जहाँ पे टाइम करना पसंद करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यस ऑफ कोर्स आई बिलीव इन लाइक एक्सप्लोरिंग फूड। मैं अपना रील्स शूट करके आई गो टू द मार्केट में फूड वॉक करना पसंद करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ,
हम लोग जाते हैं कभी न कभी से नए ऑफकोर्स ट्रैवलिंग इज वेरी वेरी गुड हॉबी विच आई हैव। मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। ये कविता है जो मैंने लाइक कुछ दिनों पहले लिखी थी। एक हमेशा हर व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कभी न कभी जब वो अकेला होता है उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है। वो कंफ्यूज होता है कई सारी चीज़ों को लेके, अंदर ही अंदर दुनिया के सामने बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बट अपने अंदर कई बार दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, मन नहीं लग रहा होता। And उस समय कोई भी व्यक्ति ना, हमें लग रहा होता है काश कि हमसे आके पूछ ले कि मन में क्या है तुम्हारा, राइट, बट वो होता नहीं है। ये जो कविता मैंने लिखी थी ये इसी टॉपिक पे थी, इसी शीर्षक पे थी कि सबने पूछा हाल हमारा, सबने पूछा हाल हमारा, पर नहीं जाना मन में क्या। नहीं हम देखे तारे कब से, नहीं रहे हम प्यारे कब से, प्रेम क्यों करना भूल गए हैं, क्यों हम सबसे दूर गए हैं। सबने देखा भीड़ कहाँ है, नहीं अकेलेपन में क्या है। सबने पूछा हाल हमारा, पर नहीं जाना मन में क्या। टोकना आसान बहुत, टोकना आसान बहुत है, कोसना आसान बहुत। टोकना और कोसना शायद हमारे वो जो पॉइंट आया ना, चार लोग क्या कहेंगे, वो यहीं से निकल के आए। टोकना और कोसना तो बहुत आसान है, तो टोकना आसान बहुत है, कोसना आसान बहुत है। कठिन है लेकिन बात समझना, कठिन है लेकिन बात समझना, परिस्थिति हालात समझना। आजाद रहने वाले कब समझेंगे बंधन में क्या है। सबने पूछा हाल हमारा, पर नहीं जाना मन में। कैसे अपनी बात रखूं, कैसे अपनी बात रखूं मैं, शब्दों से शुरुआत करूं मैं। तुम हद से मेरे साथ तो चलते, मुझ पर कुछ विश्वास तो करते। मेरे जूते काश पहनते, देखते जीवन में क्या है। सबने पूछा हाल हमारा, पर नहीं जाना मन में। सबने पूछा हाल पर नहीं जाना। तो अपने बिजनेस को लेके या अपने फ्रीलांसिंग किसी भी इनिशिएटिव को लेके अगर आप डिजिटली ग्रो करना चाह रहे हैं या आप देख रहे हैं कि हम किसी भी फॉर्म में कैसे आउटरीच अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, अपने साथ विश्व के लोगों को कैसे इंगेज कर सकते हैं, उस फॉर्म में अगर आप किसी भी फॉर्म में आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं और मेरी कंपनी सॉकेट स्क्वायर कोवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड की एक नई इनिशिएटिव डिजिटल फैक्ट्री आपके साथ हमेशा खड़ी है। हम लोग विश्व भर में 100 से ऊपर बिजनेसेस के साथ रेगुलर काम कर रहे हैं, उनको डिजिटल आउटरीच देने के लिए, उनको हर तरह से डिजिटली डेवलप करने के लिए, उनकी ब्रांड बिल्डिंग के लिए। आप किसी भी तरह कोई रिक्वायरमेंट होगा बिल्कुल डायरेक्टली मुझे टच बेस कर सकते हैं सॉकेट स्क्वायर की वेबसाइट पे जाकर भी, और पर्सनली मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करके भी, या मेरी ID socketsquare@gmail.com पे भी आप मुझे डायरेक्टली टच बेस कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई वर्क मॉक पे तो आप बिल्कुल वर्क में पहुंचें, उसे लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको मेरी जैसी और भी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है तो इंडिया के और इंडिया के बाहर के भी कई सारे लोगों की बहुत खास कहानियाँ वर्क ऑफ पे उपलब्ध हैं। आप बिल्कुल इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाश अरोड़ा की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक एवं रोचक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर दोस्तों आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।